Assalamu alaikum, everyone. Okay, sir. Welcome to our online session, Basic Legal Rights Constitution of Pakistan. My name is Aksa Sumro, and I am delighted to host this session today. We are honored to have with us a distinguished guest speaker, Sayyid Mohammad Rizvi, and he is an advocate of the High Court alumni of University of London, renowned for his exceptional legal expertise and dynamics approach. So please join me in welcoming Sir Sayyid Muhammad Rizvi. So over to you. Thank you so much for the lovely introduction. I see you struggled with my name a little bit. It's Razvi. It's not Rizvi. It's an Razvi. So the reason that we're hosting today's session on fundamental rights is because obviously आप लोग का एक organization, you're focusing on education. It's also a fundamental right. And I feel like it's really helpful for all the attendees to know what their everyday rights are as well. Introducing myself, I'm an advocate of the High Court, as Madam Aksa Sumro introduced me to be. I practice in Islamabad. I also practice in Karachi as well. I, alhamdulillah, have around 5 or 6 years of working experience. I mainly practice in corporate and commercial law. However, I've written numerous pieces on competition law, civil law, constitutional history of Pakistan, and more. I hope all of you can hear me very well, and we're going to be speaking for a short while on some of the most fundamental rights that we have in the Constitution, after which I will try to focus a bit more on the right to life and the right to education. I'll be using English and Urdu both, because obviously to get the point across, it'll be better. And I hope that out of today's session, all of you will gain a good understanding of how your fundamental rights work in Pakistan. Unfortunately, जिस वक्त पे हम बात कर रहे हैं at this day and age, it's difficult कि हम fundamental rights जैसे कि right to liberty, right to life की बात करें when there's a lot of injustice going on in the country. It's not hidden from anyone. Everyone knows about this. But regardless of that, the law has a very beautiful characteristic that it always is present. It's always there in black and white. When something is written, when something is there, you can never challenge it afterwards. It's just how it works. Before I begin, I really would like to introduce to all of you what the Constitution is, what Pakistan is like, and what does the Constitution mean in Pakistan. हम आए दिन खबरों में भी देख रहे होते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम की डिस्कशंस में भी ये बात चल रही होती है. कई लोगों के मुझे पता है वालिदैन इस बात के ऊपर बड़ा कहते होंगे जी आइन में ये शिक बदल दो, ये तब्दीली आ गई, ये हो गया, वो हो गया, 18वीं तरमीम हो गई. All of these things sound very, very, very complex, but it's actually quite simple because it affects even the most common man. It doesn't matter whether you're a lawyer, whether you're a student, whether you're a child, whether you're an adult, whether or not you're rich, whether you're poor, whether you're educated, whether you're uneducated. None of these things matter when it comes to the Constitution and the rights that it provides to you. Pakistan is an Islamic country. It's an Islamic republic, which is why our Constitution is based entirely on the injunctions of Islam. When I say that it's based on the injunctions of Islam, Bacho, that means that in Pakistan's constitution, you cannot make any amendments that go against Islamic laws and principles. In 1973, the constitution of the Islamic Republic of Pakistan was drafted, it was enforced, and then it became the special law. When it became special law, that means that in order to change any constitutional provision regarding your fundamental rights or anything else, not only does it have to be aligned with Islamic principles and Islamic laws, but it also has to ensure that you have a majority in parliament that would vote in favor of it. If you cannot achieve that majority, you cannot make a constitutional amendment. And that is not a simple majority. This adds up to a 2/3 majority. If any of you understand how parliament works, it is when you vote on your bills, it is when the voting carried out makes changes into the law. And ordinarily, you can make these changes with a simple majority. But in order to change the constitution, you need a greater majority. That being said, the constitution is the one document which comprises of everything. It establishes the state, it establishes the judiciary, the executive, and the parliament. And our constitution makes Allah subhanahu wa ta'ala the sovereign. When I say sovereign, इसका मतलब होता है कि
Allah subhanahu wa ta'ala is supreme. Nothing and no one is beyond Allah, and nothing can go against the laws of Allah. Apart from that, in our country, we have three main institutions: the executive, which consists of the government, the ministries, the armed forces, and more. The legislature, which consists of parliament and the senate. ये आपकी प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यहाँ से आपके लॉ सारे डिजाइन होते हैं. एंड फाइनली द जुडिशरी. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है, which means that the judiciary's job is to protect the constitution and the rights that are found within the constitution. Beginning with my discussion, Article 7 tells us of what the state comprises of. The Pakistan has not only a federal government, but it also has provincial governments and provincial assemblies and local authorities, which means that you have the National Assembly, then you have a Punjab Assembly, Balochistan Assembly, Sindh Assembly, KP. Similarly, you have local governments, which consists of MPAs and union councils and more. And then you have the federal government, which only consists of members of the National Assembly and members of the Senate. This is how your state is working. और इसी फ्रेमवर्क के अंदर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. अब if I simply go on to discuss the fundamental rights, I could do that within, I think, it would take me 2 minutes just to list all of them down. But I won't do that. The reason is because although it's very short to discuss, it's very important to understand what those fundamental rights mean for us. अब जो आप में से, I don't know आप लोग की ages क्या है, neither am I sure of what you're doing, neither do I know कि whether you're not pursuing law, whether you want to pursue law in the future or not. But I'll give a very small example and I think everyone will be able to relate to it. आप रात के टाइम, और कुछ अगर हमारे अटेंडीज कराची से हैं तो वो इस चीज से ज्यादा रिलेट करेंगे. आप रात के टाइम एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं या चलें किसी जगह से वापस आ रहे हैं, एक सड़क के ऊपर आपको नजर आता है कि एक पुलिस का डाला खड़ा हुआ है, एक पुलिस की मोबाइल है, साथ में दो पुलिस वाले वर्दी में फ्लैश लाइट लेके खड़े हुए हैं और सारी गाड़ियों के ऊपर वो फ्लैश लाइट मार रहे हैं, कुछ गाड़ियों को वो हाथ देते हैं. नाउ यू आर गोइंग थ्रू दैट चेक पोस्ट एंड they stop you at the check post. They stop you, they flash their light into your car. You're sitting there with your family. You have your mother or your sister with you. Your father might be there with you. And they ask you where you're coming from. So you tell them that I'm coming from the airport or I'm coming from this place or whatever place. Then they ask you where you're going. And you tell them I'm going here, I'm going home, I'm going wherever. Then they tell you, show us your identification. You show them your identification through your ID card or whatever you have, maybe your passport, जिस तरीके से भी आपको बेहतर समझ आए. And then they tell you to get out of the car because they want to search you. Then they begin to search you and they find nothing on your body. So then they tell your family to step out of the car. And when they tell your family to step out of the car, they search your vehicle. And जब पुलिस को आपकी गाड़ी के अंदर से भी कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आप हमें कोई रिश्वत दे दें या आप हमारे साथ कोई खिदमत कर दें हमारी. It is at this stage where you are being detained without any rhyme or reason, where you have been harassed without any rhyme or reason, where you have lost your liberty because you can't go from there. They've stopped you. They've taken your ID card or they've taken your vehicle documents, or in some scenarios, they've even taken your car keys or your motorcycle keys. And you can't do anything about this. So this is the exact moment where your fundamental rights come into play. This is just one example. In this example, you find that your right to liberty has been violated. Your right to being safeguarded against arrest and detention, as per Article 10, has been violated. Your dignity has been violated. Your freedom of movement has been violated.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आप एक और भी आप चीज नोटिस करेंगे, एक अजीब सा डिलेमा है कि किसी भी नाके पे आप चले जाओ वकीलों को नहीं रोकते। फैमिली के साथ हो ना हो जैसे भी हो, they will not stop lawyers. The reason isn't because lawyers are very terrible people. I mean, we are, but we're not horrible people. But the reason is because they know that if we stop them and we do anything beyond our duties or our obligations, then they will stop us right there and they will teach us a lesson. Now, the question is, how does the common man teach a law enforcement official a lesson? I'm going too far with this, but the point is that this is a stage where you make a complaint against them, or you go to the magistrate against them, or in this day and age, you even go to social media against them. This is just one example of what you can do if you know your fundamental rights. Unfortunately, I was saying, unfortunately, we see all of this in daily practice. And the only reason that this has become such a routine matter in Pakistan is because no one knows what the fundamental rights are. हाँ, given that एक बंदे को जब रोटी कपड़े और मकान की टेंशन होएगी तो वो शायद फंडामेंटल राइट्स की तरफ ना जाए, but this is the reality. I'll give you one more example. And this will be my final example before I come to the fundamental rights as per list. All of you, or at least some of you, I would hope, are students. You're receiving your education. The organization that's invited me to speak today very kindly is the Sindh Educational Organization. They're doing a lovely job in promoting awareness and they're doing a very good job of it. But I want to ask you that if you are going to, for example, you're going to a college or you're going to a university, and they tell you that you can't take admission here because you do not have the necessary personality to take admission. I'm not talking about marks. I'm not talking about fees. I'm not talking about anything. I'm telling you that you go there and the principal or the controller of that particular college or that particular school tells you that no, we will not give you an education because you lack the personality for it. And this might seem funny to some of you, but this is an actual reality. This is something that has actually happened, that women in some provinces of our country do not get an education mainly due to the reason because the educational departments there do not want to educate the women there. And they go so far as denying them this basic right. Most of these women were not able to do anything. They were not able to pursue any of their rights in any way, shape, or form. However, in 2011, a case came before the Islamabad High Court, and this was Kiran Shehzadi versus the Quaid-e-Azam University. We'll talk about this case in this discussion as well, but this is the one case that told us that even the right of higher education is provided, and every individual of Pakistan has the right to pursue their education, and they will not be unfairly or unjustly prevented from doing so. Kiran Shehzadi was a brilliant individual, is actually, and she actually went forward. She exercised her right. She was discriminated against in a city like Islamabad. I'm not even going to talk about far-flung provinces or backward provinces. In a city like Islamabad, she exercised her rights and got what she needed due to the fundamental rights as found in the Constitution. But to this extent, I've only given you a few examples of why we're here today and what we're talking about today. Now I'm going to discuss a few of your fundamental rights and those that I feel are most important. And after that, I'll host a question and answer session as well. So any person who has any relevant questions, they can bring them forward. Madam, I'd like to share my screen. Is that all right with you? Moving forward, I hope that all of you can see my screen. Now, the fundamental rights as found in the Constitution of Pakistan began from Article 8 of the Constitution. Article 8 talks about that any laws that are inconsistent with or that are against fundamental rights shall be void. This is very simple, bacho. It means that if there is any law that is passed that
is designed to violate your dignity, that is designed to violate your security, that is designed to put you into slavery or forced labor, anything of the sort, then any such law will be automatically void. This is the most basic provision, but also the most important provision. This is the reason why Kiran Shehzadi was able to go and exercise her right to education. Moving forward, Article 9 gives you security of person. Now I'm going to pause here and explain to you what security of person would mean. You see, security of person is not simply limited to the state having police in place or the state having an army to protect its citizens. No, no, no. The security of person extends beyond that. The security of person tells you that the state is responsible for ensuring that no man, woman, or child is left insecure or at the hands of at the mercy of the people. इसका मतलब ये होता है कि आपको कभी भी कोई भी इंसान आके अगर आपके खिलाफ कोई भी चीज करता है, आपको कोई मारता है या आपको कोई कत्ल कर देता है या एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, then it is security of person that protects your right to go to the police station, to file a criminal complaint, and to exercise your fundamental right. So whenever or wherever any sort of violation comes through that disturbs your security of person, Article 9 of the Constitution of Pakistan is exercised. Interestingly, इसकी हद तक दिस इज कनेक्टेड राइट जिसको हम कहते हैं द राइट टू लाइफ. अब राइट टू लाइफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा या कोई भी स्टेट का क्यों ना कोई कारिंदा हो, वो आपकी राइट टू लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता. Another judgment that I'm going to quote here, and obviously you might not have access to it, but it's called Shela Zia versus Wapta. The right to life establishes even the fact that all of you have the right to have a good environment, to environmental protection. This was a very old judgment. It comes from 1990, and this judgment talks about climate change, it talks about environmental protection, it talks about ensuring that every person has the right to lead a good life. Moving forward, बच्चों, you come to Article 10 of the Constitution, and again this is very important. अगर आप मेरी पहली वाली एग्जाम्पल की तरफ जाएं जिसमें मैंने आपको बताया that you have a safeguard as to arrest or detention, then Article 10 is very important to remember. Article 10 tells you that no person, no authority can arrest you without cause or can detain you unfairly. This means that when the police has stopped you on your way back from the airport, they have no right to keep you there after they've already checked your documents and found nothing on your person or your vehicle. एक बार जब उन्होंने तलाशी भी ले ली है, हर एक चीज देख ली है, कागज देख लिए, उसके बाद वो आपको किसी मकसद के लिए नहीं रोक सकते वहां पे. Similarly, अगर इसी सिचुएशन में वो आपकी गिरफ्तारी करते हैं, if they arrest you in the same situation, that is also unlawful because they have no reason, they have no cause, and they have no justification for putting you under arrest in this particular situation. And this is your right that is protected by Article 10. इसी को अगर मैं continue करूं तो Article 10A provides for the right of fair trial. Again, students, this is also a very important right. It's very relevant to us to understand what a right to fair trial is. I don't want to get political in this discussion, of course, लेकिन हमें right to fair trial की जितनी एक violations हो चुकी हैं पाकिस्तान में कुछ अरसे में, साल एक दो साल में, तो वो हमारे सामने. लेकिन the right to fair trial means कि कोई भी इंसान जब अदालत में आए, किसी का पर्चा हो या किसी का कोई स्टेट उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई जुर्म में उसको ट्राई कर रही हो, तो he must be given the right to be heard, he must be given the right to explain himself, he must be given the right to hire a lawyer for himself, and he must be given the right to defend himself.
अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये सारी चीजें ना सिक्योर हों तो फिर आपके मुल्क के अंदर और किसी भी मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलेगी बस। तबाही के अलावा और कोई दूसरी या फिर तीसरी चीज नहीं आ सकती। जिस वक्त पे आपका राइट टू फेयर ट्रायल चला जाए उसी वक्त पे आपका रूल ऑफ लॉ भी साथ ही चला जाता है, और उसी वक्त पे आपके मुल्क के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। आई थिंक हमारा राइट टू फेयर ट्रायल पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा खराब हो चुका है एट दिस पॉइंट। आई ब्रीफली वर्कड विद द जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन। ड्यूरिंग दैट टाइम वी did a study on death row prisoners, and while studying about death row prisoners we learned that a good proportion of people on death row that are meant to be sentenced to death die in prison or are hung in prison before their trial even comes to an end. मतलब आपकी अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से आपका केस लगा हुआ है, अभी तक सुना नहीं गया है, लेकिन उस बंदे को उन्होंने टांग दिया, उसको फांसी दे दी। Such are examples of utter violations of the right to fair trial. सो वेन एवर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपके खिलाफ कोई खुदा ना खास्ता आपका कोई अदालती मामला हो, किसी केस में आपको जाना पड़े या एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, और इवन इफ यू आर अ लॉयर, you should always understand that you have the right to be heard, you have the right to have an unbiased and impartial judge, and you have the right to a fair trial. सवाल एक ये होता है इसके अंदर के फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई जुर्म करते हो इन अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, एंड द जज is the same person who is your victim. The judge hates you, and the judge is specifically biased against you. If this type of judge is presiding over your case, then this is a violation of the right to fair trial. Again, that was just an example for your understanding. Let's move on to Article 11, which talks about the fact that slavery and all sorts of forced labor will be prohibited. Now, Article 11 of the Constitution today is इट सीम्स टू बी क्वाइट इररेलेवेंट, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि इसकी कुछ रेलेवेंस रहती है। रीजन बीइंग बिकॉज पाकिस्तान के अंदर there are still some places where people are forced into bonded labor or other forms of terrible practices that deprive them of their earnings, that deprive them of a regular life. However, Article 11 protects that right. Article 12 protects you against retrospective punishment. This means that if you've done a crime yesterday, which was not a crime yesterday, but it becomes a crime today, you will not be punished for what you did yesterday. Complex, I know. Let me explain this better. अगर आपने कल एक बंदे को गोली मार दी और कल तक गोली मारना किसी को कोई जुर्म ही नहीं था, लेकिन आज उसको जुर्म बना दिया गया, इट बिकम्स अ क्राइम टुडे, तो फिर जो आपने कल कार्रवाई की है उसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह यूर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। अगर आपने आज एक बंदे को गोली मार दी है तो आपको एक दफा सजा मिलेगी, ना कि आपको 2 दफा उसकी सजा मिले। अगर उसकी 7 साल की कैद है तो आपको 7 साल कैद एक दफा मिलेगी। ये नहीं होगा कि एक दफा 7 साल मिल गई उसके बाद 10 साल और मिल गई फॉर द सेम क्राइम। नो, यू कैन ओनली गेट पनिश्ड फॉर वन क्राइम एट वन टाइम। Moving forward, as a basic form, there is an inviolable dignity of man found in Article 14 of the Constitution. This is something that I would like to discuss with all of you now. When we talk about dignity of man includes a lot of different things. मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि आप एक हक हलाल की अच्छी कमाई कर सको। इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि so it is a question by Samar Fatma here, and it asks, in how many years the constitution should be changed? Samar, I really don't want to know why you asked that question, but in my opinion, a constitution should last as long as possible. Because we have an Islamic constitution that adheres to Islamic principles and provisions, it's not necessary to change it. Pakistan, unfortunately, we've had 3 different types of constitutions, which is terrible because we had a lot of military dictatorships in between as well. But otherwise, there's no need to change a constitution. The reason that it is a special law is because there is no need to change it. I hope that answers your question. If it doesn't,
then you can raise your hand and you can speak. So I was saying that dignity of man is not only limited to the fact that you have the right to earn money in a decent manner. No. Dignity of man means that, for example, when you go to the airport, or you're getting on a flight, or you're getting on a train, or you're getting on a bus, then nobody should be allowed to humiliate you in any way. Nobody should be allowed to embarrass you in any way or form. And no one should be able to question you regarding your decisions. इसी के ऊपर एक और बात आती है डिग्निटी के ऊपर. कुछ जगहों पे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कोहिस्तान में एक काफी मर्डर्स हुए थे, was very horrible, and in other places as well, after some certain events that were bad for a community. Yes, Samar. Ji, Samar Fatma. So she has a question, so we're going to address that shortly. You can write your question and I'll read through it. Write your question and I'll read through it. In Pakistan, we had some events जो कि कुछ communities में हुई थी in some very, very, very backward areas. वहां पे इस तरह से हुआ था कि कुछ खवातीन थी जो कि एक सिंपल एक एक्ट की थी उन्होंने, that they made videos of themselves at a mehndi or at a small wedding function, just enjoying themselves. It was a very regular thing. BBC made a documentary on it, other news channels did the same. Those women were picked up by their community and a jirga decided. jirga आपको नहीं पता तो एक jirga एक ट्राइबल तरीका होता है कोई फैसले करने का जिसमें आपकी कम्युनिटी के जो सीनियर बंदे होते हैं वो इकट्ठे होकर एक फैसला करते हैं. A jirga decided that these women should be murdered. First, they were humiliated. They were severely humiliated, they were beaten, they were put into certain corners of society that no one would like to go to. And then they were murdered. This was not only a severe violation of the right to life, but it was also a violation of their dignity. In similar terms, I'll tell you another example of what happens to the dignity of man. You're stopped. Islamabad में मैं रहता हूँ, so right now it's pretty weird कि हम अगर अभी पार्लियामेंट की तरफ में जाओ तो वहां पे सारे कंटेनर्स लगे हुए. I cannot go. It's simply not possible for me to reach red zone right now. Now I want to go there. I'm trying to go there, and if I get stopped there by a policeman, and he tells me that sir, I'm sorry, आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, then that's fine. लेकिन अगर वो मुझे बोले कि अपनी गाड़ी से उतरो और वो मुझे बेइज्जत करे और वो मुझे मारना शुरू करे और वो मुझे थाने बंद करने की धमकियां देते हुए मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करे, ये सारी चीजें मेरी डिग्निटी को अटैक करें. और जब मेरी डिग्निटी को अटैक कर रहे हो तो आप आर्टिकल 14 की वायलेशन करते हो. So there's a question from Mustajab. I don't know if all of you can see this, so I'll just read it out. It says, what if we know that it's my fundamental right and there is police for it and they are not responding, or maybe they sometimes lock us up and demand for money, and sometimes it happens like we go to police and they don't write our FIR. Mustajab, ये आपका अच्छा सवाल है. It's a very good question, no doubt. I'll answer this question in two parts. Firstly, if the police department is not responding to you, then you, like I told you, there's three parts of state. There's the legislative, the parliament, the executive, and the judiciary. तो जब executive का जो इदारा है जिसको हम पुलिस कहते हैं, जब वो आपको facilitate नहीं कर रहे, जब वो आपको respond नहीं कर रहे, तो फिर आप जाएंगे जुडिशरी के पास, क्योंकि हर थाने का, हर पुलिस स्टेशन का, या कई बार इस तरह होता है 2-3 पुलिस स्टेशन का एक मैजिस्ट्रेट होता है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. You will go to him or you will go to the Ilaka magistrate and you will tell him that this is going on and the police is not responding. If you don't even want to do that, you will go to the High Court and you will file a writ petition or a constitutional petition, as we call it, which will tell the High Court that I have a fundamental right. This is the responsible institution, for example, the police, and they are not responding to me or they are not facilitating me. And then the High Court will step in and the High Court will ensure that they respond to you and they help you. जहां तक बात रहेगी that they sometime lock us up and demand for money, मुस्तजब, इसकी हद तक मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर तो खुदा ना खास्ता आपके साथ ये कभी होता है तो आप उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर ही पर्चा डलवा सकते. आ जाऊंगा और मैं कानून में जाऊंगा तो कानून में जाके मैंने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सफीर हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, एंड आई विल इंश्योर that my right
is protected, that my right to have a fair trial, that my right to access justice is protected. This is how it works. मुस्तजाब, आई होप कि मैंने आपके सवालों को सही तरह से जवाब दे दिया हो. अगर ना समझ आई हो तो इनसे पूछ लीजिएगा दोबारा के मुझसे रब्ता कर लें, तो यू कैन पर्सनली कम. आपका सवाल बहुत रेलेवेंट था. Furthermore, students, I want to talk about the freedom of movement, the freedom of assembly, the freedom of association, and the freedom of trade, and the freedom of speech. All of these rights consist of your everyday rights. These are your most basic rights. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि आपका कोई भी किसी किस्म का रास्ता नहीं रोका जा सकता इन एनी गिवन सिनेरियो. हाँ, राइट नाउ इट्स अ बिट आयरॉनिक टॉकिंग अबाउट दिस कंसिडरिंग कि इस्लामाबाद के अंदर आपकी 5 मेन शाहराहें बंद हैं इस वक्त पे, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई सिक्योरिटी की नेसेसिटी ना हो, अगर कोई इमरजेंसी ना हो, तो कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई भी आपको बंद नहीं कर सकता कहीं पर. अगर आप किसी जहाज से बैठ के आज पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं इस मत में. हाँ, रोकते कब हैं? जब किसी किस्म का आपको कोई सिक्योरिटी का थ्रेट हो, जबकि किसी किस्म का आप कोई सिक्योरिटी का थ्रेट हो, जैसे आपको ईसीएल में डाल दिया जी, या फिर आपको पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया हो, या इस तरह की कोई सिनेरियो बनती हो. सिमिलरली जब हम फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास यह हक है कि आप जब चाहो आप इकट्ठे हो सकते हो. आपका राइट टू प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है. आप यूनिवर्सिटी में हो अगर, या चलो आप कॉलेज या स्कूल में हो, आप देखते हो कि यार यहाँ पे बड़ी नाइंसाफी हो रही है, that the administration is not doing right by us, that they don't have good policies in place, that they don't have good measures or administrative policies in place. तो आप क्या करते हो? आप सारे स्टूडेंट्स मिलके प्रोटेस्ट करते हो उनके खिलाफ. इसी तरह अगर हम डेली लाइफ में आए तो आजकल आप देखोगे कि वापटा की नहीं, सॉरी, पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉइज काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं. ये सारे प्रोटेस्ट जो होते हैं, दिस इज फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ असेंबली, दैट दे हैव द राइट टू असेंबल. नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दिस. द डेप्यूटी कमिश्नर इज ऑब्लिगेटेड टू गिव यू दिस राइट, एंड आई प्रॉमिस यू, आप जब जब किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे अदालत भागोगे, अदालत आपको रिलीफ देगी. अदालत का काम है ये कि वो आपको रिलीफ दे, कि जिधर आपकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है वो बीच में आके प्रोटेक्ट करेंगे आप. दिस इज देयर जॉब. This is what the Constitution has designated them to be. That they have to jealously safeguard the Constitution and your fundamental rights. More importantly, bachcho, I was coming to the freedom of speech and the right to information. You see, the freedom of speech is a right that is very close to my heart. I feel like every person should always have the right to be able to express their ideas, to be able to talk about how they're feeling. Unfortunately, this has been no doubt severely restricted in a lot of ways. ट्विटर आपका बंद पड़ा हुआ है या फिर और भी इस तरह के मामलात हैं, बट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट्स. और आपको अगर मैं खूबसूरती बताऊं कानून की, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कुछ ना समझ आई हो आज के लेक्चर में तो ये बात जरूर सुन लीजिएगा, इसको अपना लीजिएगा, इसको अपने दिल में बिठा लीजिएगा. ये कानून ऐसी चीज है कि इसकी बालादस्ती आज ना हो, कल भी ना हो, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होती. There always comes a day that the law will take its course. Because you see, the wheels of justice, they move slowly, but they move surely. And they will ensure that in one way or another, justice is done. And that's why the freedom of speech and the right to information, the right to know what your authorities are doing, the right to know where your public money is being spent, are all your basic rights. Summarily, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा इस सारी डिस्कशन को. हालांकि और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी बात की जा सकती थी, मैं आपसे माजरत खा हूं. अगर ये चाहें तो दोबारा इस सेशन को कर ले कि हम कंटिन्यू ऑन कर रहे हैं, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि मैं इतना वक्त नहीं आपको दे पा रहा. बट in a summary, in a nutshell, I just want to tell you two things. Number one, that all your rights are in the Constitution of Pakistan. This is not a country like the UK. This is not a country like the US. This is not any other country. It's not like Afghanistan, जहाँ पे शरिया के अंदर आपके आपके मेन
फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऑल योर राइट्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आपके फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के राइट्स हैं। कि जब मीटर वाला आता है आपका बिजली का बिल देखने, तो अगर आपको वो गलत आपका बिजली का बिल बना दे या वो गलत तौर पे आपका मीटर काट के चला जाए, तो वहां भी आपके फंडामेंटल राइट्स अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे अदालतें आपको रिलीफ देंगी। द कोर्ट्स एंड द जुडिशरी विल गिव यू रिलीफ एंड विल प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह जब आप बात करते हो कि आपको कहीं पे पुलिस रोकती है या इस तरह के एफआईए आपको रोकती है एयरपोर्ट के ऊपर, या कोई भी इदारा आपके साथ किसी किस्म की भी नाइंसाफी करता है, तो योर फंडामेंटल राइट्स कम इनटू प्ले। आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में दाखिला लेने जा रहे हो, आप मेरिट लिस्ट के हकदार हो, लेकिन आपको फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं वो डालते, योर फंडामेंटल राइट्स कम इनटू प्ले। I hope all of you will try your best to read into this. That's all that I want to give to you today. If there are any questions, go ahead. Please लिख के ना भेजो, कोशिश करो कि अगर unmute करके बोल दो, आसानी हो जाएगी। खदीजा, please you raise your hand. Okay, thank you, Hello, sir. sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। How are you? I'm good, thank you. Sir, your lecture was very informative, but मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम देखते हैं देहात में, रूरल एरियाज में कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनका राइट टू एजुकेशन जो है वो वायोलेट किया जाता है बाय देयर पेरेंट्स, इवन बाय देयर ब्रदर्स। तो हम उसको कैसे फेस करें, हम उसको कैसे चेंज करें? आप थोड़ा हमें इस तरह गाइड कर सकते हैं कि हम क्या एक्शन लें उनके लिए, ताकि हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और आपने बड़ी उनको खूबसूरत बात बाहर की, जाने बिल्कुल। के लिए इजाजत लेकर दे सकें। उनको घर से थैंक यू भगा सर। दें। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपके पास कवानीन सारे मौजूद हैं। यू हैव ऑल द लॉज, यू हैव ऑल ऑफ देम, देयर इज नॉट अ सिंगल लॉ यू वोंट फाइंड इन पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इन्फोर्समेंट बड़ी वीक है। दैट्स मेनली ड्यू टू सोसाइटल एंड कल्चरल things that we have. For example, in our culture, I remember I knew this. I had this one student. She was from Ghotki in Sindh. That's near the border of Sindh, and her parents did not allow her to continue her education. And I promise you, she was one of the most promising students that I've ever come across. She would have made such an excellent lawyer, but unfortunately, she got married and she couldn't continue her education. This situation may there are only two things that you can do. Number one, you can create awareness. Number two, you can choose to hope that the state will do its duty to provide the right to education from Article 25A of the Constitution, and the state will force those parents and those families to give their children the right to education. Otherwise, the state will take them and give them that right themselves, like they do in the UK, like they do in the US, like they do in Canada, like they do in Europe. इसकी हद तक टाइम लगेगा पाकिस्तान में। हमारा कल्चर अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। I'll take two more questions. If there's anyone else, please unmute and go ahead. थैंक यू सर। लेकिन हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है एज ए स्टूडेंट? हम अवेयरनेस क्रिएट करें एक तो ठीक है, लेकिन उससे भी लोग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको बात ये कही जाए कि आप वुमेन को एजुकेशन दे, तो वो तो ऑफेंड हो जाते हैं। तो हम स्टेट को किस तरह से प्रेशराइज करें? हमारा क्या रोल हो सकता है एज ए स्टूडेंट? हम क्या प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं स्टेट को प्रेशराइज करने के लिए? ये एक्शन I can't hear you. I'm sorry. You're muted. I'm sorry. आपका सवाल होगा pertinent, बहरहाल मुझे आपकी आवाज तो कोई नहीं आई। मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं। देखिए, आपके पास मैंने वही बात की कि आपको अगर आज नहीं सुन रहे तो कल तो सुन लेंगे, कल भी नहीं सुनेंगे, कभी ना कभी तो आपको सुनेंगे। कल्चरली पाकिस्तान इस वक्त बहुत पीछे है। हाँ, अगर इस चीज को आप कहती हैं कि ऑफेंड हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं, उस तरह हो जाते हैं, तो आप फिर बराए करम कोशिश करें कि फिर आपके जो इलेक्शन जब आते हैं तो अपने इलेक्शंस में ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो कि इंश्योर करेंगे कि राइट टू एजुकेशन पहुंचेगी। मैं कश्मीर गया, तो मैं जब कश्मीर गया तो मैंने देखा कि कश्मीर के अंदर देयर इज अ 99% लिटरेसी रेट। मैं जब हुंजा गया तो मैंने देखा वहां पे 97 to 98% का लिटरेसी रेट है। सॉरी, आई सेड द अदर वे अराउंड। हुंजा में बल्कि 100% था, कश्मीर में 97-98% लिटरेसी का रेट था। मैं जब सिंध आया तो मैंने देखा कि इट्स बिलो 20%। इस चीज को टैकल करने के लिए यू नीड टू इंश्योर दैट द लॉ मेकर्स, दैट द पीपल इन पावर, दैट द पीपल रिस्पॉन्सिबल आर those people that prioritize these things.
बुरा ना बनाइएगा। आप सिंध के लेजिस्लेटर्स को देख लें, कभी आप प्रोविंशियल असेंबली में देख लें या नेशनल असेंबली में देख लें, आपको एहसास हो जाएगा कि इनको कोई इरादा नहीं है ना कल्चर बदलने का, ना कानून को इन्फोर्स करने का। हालांकि कानून ये कहता है जरूर कि एजुकेशन का राइट मौजूद है, और कोई भी बाप या कोई भी माँ या कोई भी भाई या कोई भी बंदा आपसे वो राइट छीन नहीं सकता। और अगर आपको ज्यादा इस चीज में कोई एतराज है या ज्यादा इस चीज का कोई मसला है, तो यू आर वेरी वेलकम कि आप अपनी अदालत को अप्रोच करो। यू अप्रोच द हाई कोर्ट एंड यू टेल देम दैट दिस इज हैपनिंग टू अस, दिस इज सच अ बिग injustice and this is such a big violation of our rights. We request and urge the court to intervene, and I assure you that the judges are prudent people. They're not stupid people. They will do their best to do for you. और इसका अगर जवाब हमें ये मिलेगा कि नहीं जी हम तो अदालत भी नहीं जा सकते, तो फिर जद्दोजहद के बगैर तो कुछ नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। एक और मैं सवाल लूंगा, कायनात नाज की तरफ से है। इट्स शी इज रिटन अ क्वेश्चन, शी सेज आपने कहा कि अगर मेरिट पे सेट है फिर भी नहीं मिलती, आप एक्शन लें, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कैसे करेगी? क्योंकि मनी को पावर होता है, अगर हम एक्शन लेते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वाई से? कायनात नाज, मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं आपको सवाल का जवाब किस तरीके से दूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जरूर कि आप मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, या फिर आप बहुत ही एलीट क्लास हो या अपर क्लास हो, ये नाइंसाफियां आपको कई जगहों पे मिलेंगी जरूर, और ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन आपका इन चीजों के ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैंने एक केस का आप लोग को बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर, दैट वाज कायनात शहजादी वर्सेस कायद आजम यूनिवर्सिटी। नाउ कायनात शहजादी was not a very rich girl, she was not a very powerful girl। मैं आपको अगर बताऊं तो in this case she had an allegation that she used unfair means in her exam। आफ्टरवर्ड्स ये एलिगेशन इनकी इन्होंने खत्म कर दी कि नहीं जी ठीक है हम गलत थे, ठीक है, लेकिन उसी टीचर ने उस लड़की को पेपर में फिर अपीयर नहीं होने दिया, और जब उसको पेपर में अपीयर नहीं होने दिया तो वो अदालत चली गई, और अदालत में उसी लोअर मिडिल क्लास लड़की ने जाके पूरी कायद आजम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को चेंज करवा दिया, इस बेसिस पे कि आपने गलत तरीके से इस बेचारी बच्ची का आपने एग्जाम जाया करवाया है, इसका राइट टू एजुकेशन खराब करवाया है। तो जब आपका मेरिट पे भी कोई काम हो तो बराए करम आप उसको कोशिश करें कि परसू करें। अगर आप परसू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। So that's all. I'll excuse myself from you again. I'm very sorry that I was not able to give you more time. If you want my LinkedIn account as you've written in the chat, आप ऐसा कीजिएगा, इनसे आप ग्रुप में ले लीजिएगा, वो आपको भेज देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। Thank you so much for being here. Thank you for Yes, listening to sir. me. सर एक क्वेश्चन मेरा भी था कि जी। मतलब ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये मतलब ज्यादा कसूरवार गवर्नमेंट है या ये हमारी आवाम है, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान? ज्यादा मतलब किसकी गलती है मैडम, कसूर आपका है, कसूर कॉन्स्टिट्यूशन मेरा ना है। फॉलो करने की? कसूर आपका है और कसूर मेरा है। खुदा की कसम, कसूर अच्छा। सिर्फ आपका और मेरा है, और किसी का नहीं। इसका कसूर ही सारा यही है कि हमने यही बातें कर करके ना इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है जाबिर को और जालिम को कि वो जुल्म करे। क्या आज वो जुल्म करता है? जब टर्की के अंदर उन्होंने एक इलेक्टेड लीडर को हटाने की कोशिश की तो उसकी आवाम सड़कों पे आ गई, वो टैंक के सामने लेट गए कि हम पे चढ़ा दो, लेकिन हमारे हमारे आइन की बलादस्ती करो, हमें इस तरह जुल्म ना करो हमारे ऊपर। और यकीन करो उनके लिए इट वर्कड आउट। ये हमारा कसूर है, पाकिस्तानियों का कसूर है, अवाम का कसूर है। तो जैसी अवाम होगी वैसी हुक्मरान होंगे। तो आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि क्या ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है। नहीं, ये उस गरीब आदमी का कसूर है जो कि कहता है कराची में रहते हुए कि पानी नहीं आता चलो टैंकर लगवा लेते हैं, गैस नहीं आती चलो सिलेंडर लगवाते हैं, सिक्योरिटी नहीं है चलो गार्ड रख लेते हैं, बिजली नहीं है चलो जनरेटर लगा लेते हैं। आखिर कब तक ये जिंदगी जियोगे? दिस इज a problem that comes from us. It starts from our house, and believe me, it comes back to us. तो आपके हुक्मरान है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। थैंक यू बच्चों, सर प्लीज अब थैंक मुझे यू सो इजाजत मच दें, सर। Yes, एंड sir. दिस वाज वेरी एंजॉयबल फॉर मी। That's, ठीक है, I think that's it for today. So as we conclude today's session, I want to say थैंक यू thanks वेरी to Sir Sayed
Mohammad Razvi. Sorry for taking it wrong earlier. That's And thank you, sir. We are deeply grateful for your time and contribution. I इनको think मैडम प्लीज वो मेरा we'll लिंक्डइन surely इनको take शेयर care of कर our देना rights. और इनसे कह देना Yes, कि sir. अगर कोई भी इनको सवाल हो तो प्लीज फील फ्री एनी ठीक है Yes, I think we'll surely take care of our rights onwards. आई होप सो थैंक यू जी साहब Thank you, sir. Thank you. Thank you all for joining.